Welcome to Government College of Engineering, Nagpur. I am Professor N.R. Sahu from Department of Mathematics, and today I will deliver introduction of linear transformation with application, that is reflection. So let's begin. हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑनलाइन मैथमेटिक्स के पहले अध्याय में। कोरोना के इस महायुद्ध में हम वीरों की तरह घर बैठकर शिक्षा ग्रहण करेंगे। आशा करता हूं आप सभी अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और इसी आशा के साथ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर दैट इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे बेसिक्स के साथ, उसके बाद में कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन को डीपली समझने का प्रयास करेंगे। सो आई रिक्वेस्ट यू टू वॉच द कंप्लीट वीडियो टिल द एंड। सो स्टार्टिंग विथ बेसिक डेफिनेशन ऑफ linear transformation. By definition, to each vector x belongs to x, that is any vector x in vector space x, there exists y in vector space y. सपोज हमारे पास वेक्टर स्पेस x और वेक्टर स्पेस y है जिसमें x और y उसका एलिमेंट है। देन मैपिंग f फ्रॉम x to y is said to be linear transformation if it satisfies two properties, that is first one f of x1 plus x2 which is equal to f of x1 plus f of x2, and second f of c into x equal to c into f of x, where c is any scalar or a constant. So f is said to be linear transformation if it is a mapping which satisfies these two properties. Okay. So starting with a basic definition. In a linear transformation, what is mean by this word transformation? Transformation is a mapping which convert one thing into another thing. That is, f is said to be transformation if it convert x into y. For example, L of 1 equal to S, that is L converts 1 into S. Second, f of x equal to y, so f converts x into y. So these are the transformation. Now we will come to the basic definition of linear transformation. So by definition, to each vector x in x and y in y, where x and y are vector space, then a mapping f from x to y is said to be linear transformation if it satisfies the two properties, and these properties are: first one, f of x1 plus x2 equal to f of x1 plus f of x2, and the second property is f of c into x equal to c into f of x, where c is any scalar constant. So friends, किसी भी मैपिंग f फ्रॉम x टू y को लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे यदि वो ऐसा कुछ
मैपिंग जनरेट करे, मतलब x को y में कन्वर्ट करता हो और लीनियरिटी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता हो। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब चलते हैं इसके कॉन्सेप्ट और एप्लीकेशन की ओर। सो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, वो सारे मैपिंग या ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होंगे जो दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, डेरिवेटिव दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। सो डेरिवेटिव भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो साइन एक्स को कॉस एक्स में कन्वर्ट करता है। यदि हम प्रॉपर्टी चेक भी करें तो भी डेरिवेटिव सेटिस्फाई करेगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सेकेंड वन, लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इज एस। एल भी एक ट्रांसफॉर्मेशन है जिसने वन को कन्वर्ट किया एस में। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। A into x equal to y. Suppose A is any square matrix, x is any column vector, then matrix A convert x into y. Now matrix दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि नहीं, चेक करते हैं। फर्स्ट वन, वी नो दैट A into x1 plus x2 equal to A into x1 plus A into x2 by distributive property. Second, A into Cx equal to C into Ax. So मैट्रिक्स ऑलवेज सेटिस्फाई करता है दोनों प्रॉपर्टी। सो मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन भी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर हमने f को रिप्लेस किया है a से। सो हमें मिला है ax इक्वल टू y, दैट इज y इक्वल टू ax, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन, मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। अब मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन के रियल लाइफ एप्लीकेशन की ओर चलते हैं, जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन मीन्स क्रिएटिंग इमेज लाइक दिस। सो चलते हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन की ओर। So first important application of linear transformation is reflection in the line y equal to x. So consider linear transformation y equal to ax, that is ax equal to y, where A is the matrix 0 1 1 0 multiply with column vector xy, and matrix multiplication converts this column vector into yx, which shows reflection about the line y equal to x. So if we put point x comma y equal to 1 comma 2, then this point A 1 comma 2 is converted into a dash 2 comma 1 as shown in the graph like this. So here the role of matrix is reflecting one point to the another. Now second one, reflection, that is reflection about x axis. Now consider the matrix 1 0 0 minus 1. Here it is important to choose the matrix. So after multiplication of matrix with column vector xy, it converts into x minus y. So हर रिफ्लेक्शन के लिए मैट्रिक्स का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब सपोज कॉलम वेक्टर एक्स वाई की जगह हम नया पॉइंट चूज़ करते हैं
1,2, क्योंकि कॉलम वेक्टर को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिख सकते हैं. So after putting 1,2 we will get 1 minus 2 after multiplication. Therefore in this transformation matrix A converts the point A 1,2 to A dash 1 minus 2, and it shows the reflection about x axis as shown in the graph. Now in 3D graphics it look like this. So point A 1,2 converted into A dash as shown in the graph. Now third important reflection about y axis. So for reflection about y axis we will choose the matrix with element -1 0 0 1, and after multiplication with xy it gives -xy. Now put x comma y equal to 1,2. Therefore after multiplication of this matrix with 1 2 it gives -1 2. So in this transformation point A 1,2 converted to A dash 1 minus 2, and which shows the reflection about x axis as shown in the graph. So it reflects the point about y axis as shown in the graph. And let us look, this image is converted about y axis. So now fourth one important, that is reflection about origin. So ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है कि किसी भी रिफ्लेक्शन के लिए, चाहे अबाउट एक्स एक्सिस, अबाउट वाई एक्सिस या फिर ओरिजिन के लिए, मैट्रिक्स का सिलेक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो यहाँ पर मैट्रिक्स में हम डायगोनली -1 लेंगे और बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट 0. सो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन विथ एक्स वाई it convert the column vector xy to -x -y. Now put x comma y equal to 1,2. Therefore after multiplication of matrix with 1 2 it gives -1 -2. Therefore in this transformation matrix A transforms point A 1 2 to A dash -1 -2, and it shows the reflection about the origin as shown in the graph. So in reflection about origin in this graph there is 4 quadrant 1 2 3 and 4, and suppose there is a triangle in the first quadrant. Now this triangle will get reflected about the origin in third quadrant as shown in graph. अभी यहाँ पर ट्रायंगल के जितने भी पॉइंट्स हैं उसको मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के बाद जो न्यू आउटपुट मिलेगा वो सारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट होंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड दैट इज़ द रोल ऑफ मैट्रिक्स, दैट इज़ रिफ्लेक्शन. Now next one important application, that is translation or stretching. Translation or stretching is nothing but extending one vector in the same line, and for this we will use the matrix A0 0 1 where A is some positive constant. Now after multiplication it gives xy converted to axy. Now suppose put x comma y equal to 1 2 and a equal to 2. Therefore matrix will be 2 0 0 1 into 1 2 which gives 2 2. Therefore in this transformation matrix A transform coordinate A 1 2 to A dash 2 2.
which shows the translation or stretching as shown in the graph. That is translation or stretching. After multiplication, we have seen a 1 comma 2 converted to 2 comma 4 in the translation or stretching. Now look in the graph, the letter n translate or stretch as shown in the graph, like this in the same line. In 3D it will look like this. So it is translation along the same line. Now stay home, stay safe, and do one homework, that is find the matrix which shows contraction like this. So contraction is also one of the important application. Next, summary. In this video lecture we have seen definition of linear transformation, matrix of transformation as an example of linear transformation, and application of linear transformation, that is first one reflection and second translation. Thanks for watching, and don't forget to subscribe my channel Sahu Super Maths.